है एवरीवन। आज हम डाउनलोड करेंगे पाइथन फॉर द विंडो। ओके, तो गए लिंक पे, किया डाउनलोड पाइथन, डाउनलोड ऑप्शन पे किया, गए कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे, नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्यों कर रहे हैं, तो सी यहाँ पे आ रहा है ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल। इफ़ यू क्लिक दिस ऑप्शन तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा। मीन्स जो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन लोकेशन आपकी होती है वो डायरेक्टली ये उठा लेता है। ठीक है, ठीक है। नाउ डीबग बाइनरीज भी हम इस पर क्लिक करेंगे एंड डन। Here the setup has been done. तो ये है हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। क्योंकि अगर आप पाइथन सीखने जा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, थिंक कुछ सेकंड्स। तो एक बार ये डन हो जाए एंड देन आई विल शो कि विजुअल स्टूडियो को कैसे रन करेंगे। बहरहाल मेरे में विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसमें ज़्यादा कुछ खास करना नहीं होता। ठीक है, वी जस्ट नीड टू गो, इफ़ यू वांट टू क्रिएट न्यू फाइल वी कैन गो हियर। हम कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल का। तो मैंने दिया सेकंड प्रोग्राम डॉट पी वाई। ओके, एंड क्रिएट न्यू फाइल। तो नाउ यू विल सी कि सेकंड प्रोग्राम डॉट पी वाई। ओके, create file. It is not taking the py from here. Cancel it. Okay, new file, second dot py, save. Create file. So you don't have permission to save this location, wanted to permission to obtain permission to like to save document folder instead. So yes. Okay, now we'll go in this PC, open the C drive. So in the program files, we can go right here in the command helps, so we can directly create file. Now you will see partial Python scripts, zoom. So it's taking the option. Okay, so why it's not taking, because we are directly going into this. We'll go in the program files, or not in the program files, go in the user.
click on a Dell. Here it is the VS Code. Yeah, now we can go here. So you will get the option right here. Okay, in the Dell के अंदर VS Code and VS Code के अंदर second.py. ठीक है. So I'm working on the first program .py. Okay, now my Python has been installed. I think it's usually don't take this much time, but it's taking. No issue. Yep, its setup has been successfully installed. Close. We go here. If we want to see the Python is installed in our system or not, go here, just write cmd, open the command prompt, right here Python version. So you can see 3.12.2 version has been installed successfully. Okay, so now that's all you will have to remember. Okay, thank you for today. Keep supporting. Thank you.